last class we have started with pin diagram of 8085 microprocessor, and we have already done 4 to 5 pins. So I'll start with those pins only, just a small revision. We have finished with X1, X2 and clock. These 3 pins are related to system clock. So these IC works on DC supply plus 5 volt DC. Here we are giving at this pin number 40, and this is ground pin. Pin number 20 is ground pin, and pin number 40 is the VCC, positive supply, or plus 5 volt you can connect here, right? So X1 and X2, here we need to connect a crystal oscillator which converts your DC into pulsating DC, because clocks are like pulse signal. So why we need clock? Clock we need for synchronization purpose, so that all the peripherals connected with microprocessor can synchronize with microprocessor, or microprocessor के भी internal work के लिए. So we need to synchronize each and every part of your system. So X1 and X2, these are 2 pins where you can connect the crystal oscillator of 6 megahertz, right? So 6 megahertz का जो crystal है, internally it divides the frequency by 2. How? Because of that toggle flip-flop. We have done that diagram also, that this is your crystal and we have connected crystal in between these 2 pins X1 and X2, and this is passing through a toggle flip-flop, which is also called a frequency divider circuit, that divides the frequency by 2. So if your microprocessor operating frequency is of 3 megahertz, then your crystal frequency should be double because of this toggle flip-flop. And each flip-flop having 2 outputs, so these 2 phases for different purpose. The first, this phase is going to the clock out pin, this pin number 37, so that it can connect all the peripherals connected with microprocessor. So it will give clock signals to all the peripherals so that they can synchronize with microprocessor. And this second phase is going to microprocessor itself. Okay, so why we need crystal? Just to provide clock signal. So these 3 pins are clear. Next we did reset out and reset in bar. These 2 pins we did. Reset in bar is basically, it is used to reset the 8085 microprocessor, and once it is reset, so it will send that acknowledge signals to this reset out, and this signal will be, it should connected, or it is connected to all the peripherals. तो अगर 8085 reset हो गया है तो all the peripherals should also be in reset mode, and this signal, reset out signal, that give the signal कि अभी 8085 microprocessor reset हो गया है, तो all you need to reset. तो ये सारे peripheral reset out से सब reset हो जाएंगे. Then we did sort and set pins. Sort and set pins, we have done already. Sort and set pin, these 2 pins are reserved for serial communication. Means peripherals जो थे उस टाइम पे 1 by 1 bit transfer करते थे, और 8085 microprocessor is 8 bit microprocessor, so it can transfer 8 bit data simultaneously. So to communicate with those peripherals, तो 8085 पे ये 2 pins जो हैं, these are reserved for serial communication. So what is the function और कैसे ये काम करता है? In this, the MSB bit of accumulator, register A stands for accumulator. The MSB bit of the accumulator will transfer to peripheral with the help of this sort pin. Sort stands for serial output data. Means out data means when peripheral, or sorry, when microprocessor wants to transfer data to peripheral, so it will send that signal with the help of which instruction? Sim instruction. It will transfer this bit on this sort pin with the help of sim instruction, and from this sort pin it will transfer to the peripheral. That is the function of serial output data. Then next bit will come here, and then this will be transferred to the sort pin with the help of sim instruction. So this way 8 bits, bit by bit it will transfer to the pin number 4, and from that our peripheral can take that data.
that is serial out. And same way, if peripheral wants to transfer data, then we have SID pin. SID pin में the peripheral will transfer or send the signal or data at pin number 5, and from this pin number 5 it will transfer to microprocessor. Where in the microprocessor? In the accumulator. Where in the accumulator? At the D7 bit of the accumulator, with the help of whom? With the help of RIM instruction. ओके, तो ये दोनों जो पिन्स हैं वो इस नेम से आते हैं. As I already told you that this sword and SID is basically called as serial IO ports or serial IO control. In your exam, आपके एग्जाम में ये सीरियल आईओ कंट्रोल के नाम से दोनों पिन्स आते हैं. इंडिविजुअल भी आते हैं और कहीं पर ये पूरा term ही आता है, explain serial IO control. So in that case, you need to explain SOD and SID, right? That we did in the last class. Now the next 5 pins are reserved for interrupts. Which interrupts? Hardware interrupts. So as we have already done interrupt system, so we have two types of interrupt system in 8085: hardware interrupts and software interrupts. So I'll revise little bit here also. So we are talking about here about hardware interrupts. So hardware interrupts are those interrupts which is initiated by external peripherals, like. And what are software interrupts? Software interrupts are initiated by microprocessor itself. So hardware, why we call hardware? Because it is physically present on the pins of 8085 microprocessor, where you can connect all the peripherals so that they can communicate with processor, right? If peripheral wants to communicate, so how they will communicate? By sending interrupt signal. So these are 5 interrupts which they can peripherals can use for communication. So as you already know about these hardware interrupts, we have trap, which is a highest priority interrupts. What do you mean by priority? Means if 2 or 3 peripherals wants to communicate simultaneously, then 8085 will take which one first? It will take which has higher priority. So if you see the sequence, तो उसी sequence में ही आपकी priority है. Trap has got highest priority, then RST 7.5 has lower than trap, then 6.5 lower than 7.5 and trap, like 5.5, and INTR has got lowest priority interrupt. ये MCQ में question आ सकते आते भी हैं. Which has the lowest priority interrupt in hardware, which has the highest priority interrupt in the hardware. तो सबसे पहले आपको priority बतानी है. Then we should know about whether they are maskable or non-maskable. What do you mean by maskable? Means which you can disable, which you can hide. Means if you don't want while executing your program, then you can disable. So that if you can disable through instruction or through software, then those interrupts are called maskable interrupt. And non-maskable interrupts are those interrupts which you cannot disable through any instruction or software. Understood? So in out of 5 hardware interrupts, trap is the only which is non-maskable. Means you cannot hide it or you cannot disable it. It is always in enable mode. ठीक है, तो इस पे हम किस तरह का पेरिफेरल कनेक्ट करेंगे? जो कि विच वी कैन नॉट अवॉइड, विच वी शुड नॉट अवॉइड. जैसे लाइक फायर अलार्म, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. फायर अलार्म, तो दैट शुड बी एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी ना. इफ समथिंग इज देयर, इफ फायर इज देयर, देन एवरीथिंग शुड स्टॉप एंड दिस शुड raise the buzzer, it should open the outlet. जैसे भी water outlet, कुछ तो सिस्टम इसमें ऐसा जोड़ना चाहिए कि सबसे पहले सब काम छोड़ के वो यही काम करे. तो trap has got highest priority and it is non-maskable, means which we cannot disable. And other 3 interrupt, if you can see, that is RST 7.5, 6.5 and 5.5.
these three interrupts are maskable interrupt. Interrupt is also maskable, but these three interrupt we can enable or disable with the help of instruction. So we have instruction EI, enable interrupt, DI, disable interrupt, RIM instruction, SIM instruction, where we can disable these three maskable interrupts. Understood. And what about INTR? INTR is also maskable interrupt, but this we cannot disable with the help of instruction. For that, we have this special acknowledgement pin, INTA bar, interrupt acknowledge. As we have already discussed, what do you mean by bar? Means it will activate when they are low, when they are having zero at this pin. मतलब जब इस पे जीरो होगा तभी ये एक्टिव होगा. That's why it is called active low. Means when they are low means they are active. So INTR is basically if peripheral is connected with INTR. So 8085 will send this interrupt acknowledgement signal after receiving INTR. So this is input signal and this is out signal from microprocessor to that peripheral. Okay, I have received your request. Let me complete my work and तब तक वो उसको क्या करेगा, acknowledge करेगा that I have received your signal. It will send acknowledgement signal कि let me finish my work. Then I will give you service. Okay. So for INTR we have special acknowledgement signal INTA bar. Understood. So understood the concept of this trap, which is higher priority and non-maskable interrupt. These four are maskable interrupt. Out of these four, these three can be enabled or disabled with the help of software. And INTA bar is the acknowledgement signal for INTR. कि INTR से जब भी कोई इंटरप्ट पेरिफेरल करेगा तो 8085 उसको कैसे एनेबल और डिसेबल करेगा, बाय गिविंग दिस. अगर उसे नहीं उसे एंटरटेन करना तो वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं सेंड करेगा. तो इट इज जस्ट लाइक अ मास्किंग कि इफ 8085 if it is not doing any important work, or if it is doing any important work, then it will not entertain this INTR. It will entertain when if it is free. So means it is just like a masking ना कि अगर 8085 उसको response ही नहीं दे रहा तो it is in disable condition, right? So understood this concept. और एक और concept भी मैंने आपको बताया था, vectored and non-vectored interrupt. So we have total 13 interrupts including hardware and software. 5 hardware interrupt. Many students writes INTA bar is also an interrupt. No, it is not an interrupt. It is acknowledgement signal sent by 8085 processor when it will receive INTR. Okay, so you have 5 hardware interrupt and 8 software interrupt. So total you are having 13 interrupts in 8085 microprocessor. So out of 13 interrupts, only one INTR is non-vectored interrupt and other 3 are vectored interrupt. Now what do you mean by vectored? Vectored means कि it will every interrupt has its own ISR. ISR means interrupt service routine. Means whenever there is an interrupt, then program counter will get the address of ISR, first address of ISR. तो ISR का हमने formula calculate करना सीखा था 8 into the type of interrupt. Type of interrupt you have to see this number. So you have to multiply with 8. Why 8? Because every subroutine is reserved with 8 software, 8 memory locations. Understood? That's why we are at. तो जैसे आप ट्रैप को मल्टीप्लाई करोगे, ट्रैप को किससे मल्टीप्लाई करना बताया था, इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 4.5. okay, and others numbers are given. Trap RST 7.5 में you have to multiply with 7.5. 8 into 7.5. So what will you get? You will get in the form of decimal number. So you need to convert into hexadecimal by using hexadable method. तो जो भी आंसर आएगा डेसिमल में उसको डिवाइड बाय 16 करते जाओ,
question लिखते जाओ रिमाइंडर, एंड इफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 9 यू हैव टू राइट इन दी अल्फाबेट फॉर्म ABCDE, राइट। वो लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो सारे वेक्टर एड्रेसेस यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 8 इंटू द टाइप ऑफ इंटरप्ट। सेम वे जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने हैं, 8 RST 0 1 2 3 7 अप टू 7। तो यू कैन टेक 1, तो 8 इंटू 1 तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा 0008। 8 इंटू 2 करोगे तो 16, तो RST2 का एड्रेस क्या हो जाएगा, 16 को कन्वर्ट करोगे एग्जाम में तो you will get 10, तो 0010। This way you can calculate any vector address। तो ये MCQ में आता है कई बार क्वेश्चन, the vector address of trap is या vector address of RST 6.5 is, तो you should know how to calculate। और याद कर सकते हो तो करो, नहीं तो नहीं याद रहता या confusion होता है तो you have that method, with the help of method you can calculate। Understood? So these 5 or 6 pins are clear now. These are all reserved for hardware. 5 pins for hardware interrupt, and 6th, 11th pin is the acknowledgement signal of this INTR. Okay, so this line is clear. We have already done 11 pins. यहाँ तक कर लिया हमने। ये pin कर लिया, pin number 37, 36 we have done, VCC we have done, and DSS we have done. Okay, now we will do this 16 pins together। तो ये तो बहुत easy है। See, अभी हमने बोला कि addresses are generated from address bus, or addresses are generated from microprocessor, and this bus is unidirectional। ये हमने buses के time पे पढ़ा था। तो it is generated by 8085, तो it should move from 8085 ना, it should come out from 8085। so how they will come out, with the help of through these pins only। so we need to reserve 16 pins for 16-bit address। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें 12 to 19, ये जो है AD0 to AD7, these are 8 lower order bytes। ठीक है, कौन सी पिंस, AD0 to AD7, इनको हम क्या बोलते हैं, लोअर ऑर्डर बाइट एड्रेस। क्योंकि लोअर और 2 बाइट्स है ना इसमें, 16 बिट मतलब यू हैव 8 बिट 8 बिट, और 8 बिट का 1 बाइट बनता है, तो यू हैव 2 बाइट्स इन दिस। so this number AD0 to AD7, this is your lower order byte, and then from A8 to A15, this is your higher order byte। okay, इसको हम कैसे बुलाते हैं, lower order byte, and this is your higher order byte। since it is 16 bit consists of 2 byte, so AD0 to AD7 is called lower order byte। क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम इसको इसी वर्ड से ही बोलते हैं, रिजल्ट जब स्टोर करना है तो लोअर ऑर्डर बाइट पहले स्टोर करो, हायर ऑर्डर बाइट नेक्स्ट लोकेशन में स्टोर करो, तो इस तरह से आता है। So you should be clear what is lower order byte and what is higher order byte। Now in this 16 pins तो हमने दे दिए किसको, एड्रेस बस को। अभी डेटा बस भी तो 8085 में आती है, ठीक है ना, डेटा ले जाती है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए लाती है, और प्रोसेस होने के बाद वापस रजिस्टर में ले जाती है। बट देयर इज नो डेटा बस। Here you can see any 8 lines for data, no, because we don't have sufficient pins to accommodate data bus separately। So what that time manufacturer did, they multiplex address and data bus together। That's why if you can see, the lower order byte name is address data 0, AD1, AD2, AD3, like that। Why? Because it is a combination of lower order address bus as well as data bus। data bus कितनी है 8085 की, 8 बिट की, तो हमें और 8 पिन चाहिए ना डेटा बस के लिए भी। तो हमारा आईसी ही 40 पिन का है, और इसके अंदर अभी और भी फंक्शंस बाकी हैं। तो कैसे अकोमोडेट करेंगे, तो व्हाट दे डिड, दे मल्टीप्लेक्सिंग यू नो ना, मैनी टू वन। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग है, 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर हो गया ना, कि यू हैव 2 लाइन्स। इस तरह से मल्टीप्लेक्सर होता था ना हमारा 11th में, वी हैव 2 लाइन्स एंड 1 आउटपुट।
मैनी टू वन। तो इसमें टू लाइन्स कौन सी है, एक लाइन है एड्रेस लाइन और दूसरी लाइन क्या है, डेटा लाइन। और मल्टीप्लेक्स में कौन सी आएगी, एड्रेस या डेटा। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन इट इज एड्रेस और व्हेन इट इज डेटा। ओके, क्योंकि अभी डेटा भी इसी पे जाना है और एड्रेस भी इसी पे जाना है। तो व्हेन इट इज एड्रेस और व्हेन इट इज डेटा, हु विल डिसाइड, ठीक है। एंड व्हेन इट इज देयर, तो अभी हमने जो बस का स्ट्रक्चर और माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम व्हेन वी डिड, तब हमने बोला था कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वी नीड टू सिलेक्ट एड्रेस। एड्रेस सिलेक्ट होने के बाद हम एड्रेस डिकोडर डिकोड करता है, डिकोडर डिकोड करने के बाद चिप सेलेक्ट लाइन विल एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर पेरिफेरल एंड देन डेटा विल ट्रांसफर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन लाइंस पे और इन पिंस पे फिर क्या होना चाहिए, इफ यू आर ट्रांसफरिंग समथिंग, तो इन लाइंस पे सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो तो these lines first should represent address. Address decoder will decode those address and it will tell कि डेटा कहाँ से आना है जाना है whatever it is, ठीक है। तो डेटा जहाँ से भी आना जाना है उस पेरिफेरल को चिप सेलेक्ट लाइन विल सेलेक्ट, ठीक है। एंड देन इन थर्ड स्टेप डेटा विल ट्रांसफर। ओके, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज देयर। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लेक्सर याद हो तो दिस इज 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर, राइट। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कौन करेगा, हु इज गोइंग टू सेलेक्ट, तो वी हैव वन सेलेक्ट लाइन ना, S0 S1 S2 बनाते थे। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट लाइन कौन है, दिस सेलेक्ट लाइन इज दिस ALE, एड्रेस लैच एनेबल। The full form of this very important when बोर्ड में बहुत बार एक्सप्लेन करने को आती है, it is basically used to select that which data will transfer। और हम इसको वैसे भी बोल सकते हैं, it is used to demultiplex और it is used to separate address and data line by enabling latch। इसका मतलब क्या है, एड्रेस लैच एनेबल। लैच इज बेसिकली अ प्लेस, अ स्टोरेज प्लेस वेयर इट विल स्टोर दैट लोअर ऑर्डर बाइट, ताकि ये लाइंस जो है डेटा के लिए फ्री हो जाए। Understood? So it is basically, it is in multiplex form. Then who is going to separate this? It is separated by ALE. अंडरस्टूड। तो हमारा जो इसमें मल्टीप्लेक्सिंग हुई है वो उसको सेपरेट और डीमल्टीप्लेक्स कौन करेगा, दिस ALE सिग्नल एड्रेस लैच एनेबल। तो एड्रेस लैच एनेबल जो है वो स्टार्टिंग में हाई होना चाहिए। जैसे ये हाई होगा it will activate address line, means it will activate latch। latch is a place। यहाँ पर हमारे 8085 के जो किट है उसमें 74LS373 एक आईसी है जिसको हम लैच बोलते हैं, जहां पर ये लोअर ऑर्डर एड्रेस स्टोर हो जाएगा। आई शो यू द डीमल्टीप्लेक्सिंग डायग्राम कि कैसे ये काम करता है। See, this is demultiplexing of address and data bus। अब आपने यहाँ पर कितनी लाइन्स हैं, AD0 to AD7 you have this demultiplex line and A8 to A15 ये तो exclusive ही है, there is no combination or it is not combined with anyone, right? So they are exclusively available for you, but this is a mixture or multiplexing, so we need to separate। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, लैच है, दिस आईसी इज लैच वेयर यू कैन स्टोर दिस लोअर ऑर्डर एड्रेस। अंडरस्टूड? हियर यू कैन स्टोर लोअर ऑर्डर एड्रेस। तो ये जो एड्रेस है, जब ALE स्टैंड फॉर एड्रेस लैच एनेबल, इट विल एनेबल दिस लैच ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ योर इंस्ट्रक्शन। जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए देते हो उस टाइम पे ये इसको इमीडिएटली
ये हाई हो जाता है और ये इसको एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ये इसको एक्टिवेट करता है तो इस पे जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। नाउ दिस एड्रेस इज स्टोर और इसके आउटपुट पिन से यू विल गेट लोअर ऑर्डर एड्रेस। आपका एड्रेस कहीं खोता नहीं, कहीं गुम नहीं हो जाता, कहीं लॉस नहीं होता उसका। इट इज अवेलेबल एट द आउटपुट ऑफ दिस लैच। नाउ you have full 16-bit address with you, right? Now these lines are free for data. ओके तो जैसे ये एड्रेस इसमें बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो ये एएलई जो है एक थोड़े टाइम के बाद अपने आप लो हो जाती है। आई टेल यू थोड़ा टाइम कब, when it is low or when it is high, that I will tell you. So ALE will enable during the execution, starting point of the execution of your instruction. एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम लगता है पूरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में, तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे ये हाई हो जाती है और जैसे ये हाई होगी इट विल स्टोर दिस लोअर ऑर्डर एड्रेस इन द लैच और उस थोड़े टाइम के बाद वो सिग्नल अपने आप लो हो जाता है और ये लैच जो है this storage place is locked now. ठीक है, लैच, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज लैच। उसके बाद ये लॉक हो गया पूरी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम तक और ये जो लाइंस हैं दीज लाइंस आर नाउ फ्री फॉर डेटा थ्रू आउट योर इंस्ट्रक्शन टाइम। जब तक आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक ये जो लाइंस हैं, जो ये पिन्स हैं, दिस विल बी वर्क फॉर डेटा नॉट फॉर एड्रेस। एड्रेस के लिए ये सिर्फ थोड़े ही स्टार्टिंग के टाइम के लिए ये वर्क करेगी और उसमें उस टाइम के अंदर अंदर ये लैच में एड्रेस स्टोर कर देगी और जैसे ये स्टोर होगा एएलई सिग्नल लो हो जाएगा और जैसे ही एएलई सिग्नल लो होगा these lines will behave like a database. Understood? ये मैंने नेट से लिया था डायग्राम कि अगर बहुत सारी लाइंस बनाने में टाइम जा रहा है तो यू कैन शो विद वन सिंगल लाइन, दैट इज आल्सो करेक्ट। सेम ही है आप देखोगे तो, बट मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि दिस वे आल्सो इफ इट इज टेकिंग टाइम कंज्यूमिंग, कई बार आता है ये क्वेश्चन what how address and data bus demultiplex in 8085 microprocessor, so you have to explain about ALE। ठीक है कि ALE लैच को एनेबल करता है और लोअर ऑर्डर बाइट जो है लैच में स्टोर हो जाता है। जैसे ही ALE लो होता है तो ये लाइंस जो है डेटा लाइंस की तरह वर्क करती हैं और these lines are exclusive, this is reserved for higher order address bus। Understood this concept? Any doubt in this? Demultiplexing very easy, so we don't have sufficient pin to accommodate the data bus separately, so what they did that time, they multiplex data bus along with lower order byte address bus। Understood? अब एक इसमें पॉइंट है कि एएलई कब हाई और कब लो होता है, तो ये क्वेश्चन जो है ये सेपरेट क्वेश्चन है, बट आई शो यू कि व्हेन इट इज हाई एंड व्हेन इट इज लो। ये एक खुद में ही 3 मार्क का क्वेश्चन है। In what is instruction cycle, what is machine cycle, and what is T-state. The instruction cycle is basically a 3 marks question and 3 definition only, and this diagram you need to draw, that's all। full marks मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए and very important, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। मैंने क्यों पेन डायग्राम के साथ लिया है, क्योंकि आई वांट टू शो यू कि एएलई सिग्नल कब हाई होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। ओके, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। Okay, now what is machine cycle? I'll read this line later on. Okay, this instruction cycle required 1 to 5 machine cycle। Okay, what is machine cycle? See, every instruction हम उसमें क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है, इट विल फेच, इट विल डिकोड, इट विल एग्जीक्यूट। ठीक है ना, तो फेचिंग में क्या होगा, रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, आफ्टर डिकोडिंग देन प्रोसेसिंग में क्या होगा, इट विल टेक द डेटा फ्रॉम any device or from memory or from
register, and then it will process the data and then display. So that is called execution of an instruction. कि एक instruction अगर जैसे addition है, add भी कर रहे हो, तो what is the procedure that it will take the instruction from memory, it will take the data from accumulator and register पे, it will add that and then display. तो हर एक का रीडिंग द डेटा, प्रोसेसिंग द डेटा, तो हर एक में हमारे सब ऑपरेशंस है, फेचिंग है, डिकोडिंग है, एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन मतलब रीडिंग है, ऑपकोड फेच है, राइटिंग है। तो इस तरह के जो सब ऑपरेशंस होते हैं एक इंस्ट्रक्शन में, उसको हम मशीन साइकिल बोलते हैं। तो मशीन साइकिल इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग ईदर मेमोरी और आई। ठीक है, तो हर एक इंस्ट्रक्शन में आप उसको हायर क्लासेस इंजीनियरिंग में ज़्यादा पढ़ोगे कि हर एक इंस्ट्रक्शन में कितने मशीन साइकिल्स होते हैं। तो हमारे सिलेबस में तो हम लिखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ नॉर्मली 1 to 5 मशीन साइकिल। वैसे हमारे टोटल 8 मशीन साइकिल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। आई शो यू इन नेक्स्ट क्लास कि 8 मशीन साइकिल्स 8085 माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेस करता है। तो उन 8 मशीन साइकिल्स में से आपके इंस्ट्रक्शन में या तो 1 मशीन साइकिल भी हो सकती है, और मैक्सिमम इट कैन हैव 5 मशीन cycles. Okay, that's why instruction cycle consists of 1 to 5 machine cycle. So understood what is machine cycle? Machine cycle is Yes, ma'am. basically the sub operation, रीडिंग, राइटिंग, ऑपकोड फेचिंग, मतलब इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन है वो सब ऑपरेशन को हम बोलते हैं। तो हर एक इंस्ट्रक्शन में 1 से 5 मशीन साइकिल होते हैं। नाउ व्हाट इज टी स्टेट? टी स्टेट इज बेसिकली 1 क्लॉक पीरियड। ठीक है, दिस इज 1 टी स्टेट। ठीक है, इसमें कितना काम होता है और कितनी इंस्ट्रक्शन का पार्ट एग्जीक्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड टी स्टेट। So this is called the subdivision of an operation which is performed in 1 clock period. Okay, so how much operation or how much sub operation you have completed in 1 clock period is called T state. So why I have taken this in this? अब जो ALE है, जो मैंने बोला कि स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन में वो हाई रहती है, वो यहाँ पर हाई रहती है ऐसे। ठीक है, और इसके बाद वो पूरे मशीन साइकिल, पूरे इंस्ट्रक्शन साइकिल तक लो रहती है। तो at the starting or at the first machine cycle of the instruction, ALE signal will be high, and when ALE signal is high, it will enable the latch. That's why its name is क्या है, address latch enable. It will enable the latch where you can store lower order byte. Understood? And when it is high during the first machine cycle of the instruction. तो यहाँ पर स्टार्टिंग के जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पीरियड आता है, ये इस तरह से हाई हो जाता है। कौन सा सिग्नल? ए है। ठीक है, तो ये जब हाई होगा तो क्या होगा, एड्रेस जो है लैच में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये अपने आप लो हो जाता है, और जब तक ये इंस्ट्रक्शन साइकिल चलती है तब तक वो लो रहता है। तो इट इज शोइंग दैट it is showing that pins are for now address, sorry, for data, very sorry, it is for data. तो अब जो 8 पिंस है 80 to 87, वो क्या, उस पे क्या है, सिर्फ डेटा है। और एड्रेस कब था? जब फर्स्ट मशीन साइकिल में, जब ALE हाई, मतलब वो सिर्फ उस थोड़े मोमेंट के लिए चाहिए ताकि वो वहाँ से एड्रेस को निकाल सके और लैच में स्टोर कर सके, और लैच से फिर आगे उसको एड्रेस तो चाहिए। एड्रेस तो पूरा टाइम हमें कहीं ना कहीं 80-16 बिट एड्रेस पूरा दिखना चाहिए ना कि ये पेरिफेरल से हमारा डेटा जा रहा है या आ रहा है। अंडरस्टूड? क्लियर? ये खुद में एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, definition and this diagram. So I hope it is clear. ALE by demultiplexing. तो नेक्स्ट जो भी पिंस रह गए हैं, we will finish on Thursday. We have